Hello, welcome back to the channel. This is Abhinav. So in this video, we're going to talk about the problem A and problem B of code forces around 769, which is so the problem A is ABC. Okay, so basically, there in this problem, there you are provided with a substring, or basically with you are provided with a string S. Okay, and it is a binary string. Binary string means it contains either 0 or 1. Okay, the letters it contains 0 or 1. Okay, it will not contain any letter other than 0 and 1. So and it is given that sorry, that if that particular string contains a substring that is a palindrome. So if there is a substring inside that string that is a palindrome, then in that case that a particular algorithm will not work. It will work incorrectly. So the students have to reorder that particular character so that the algorithm should work correctly. So for that, the thing is that so for making the algorithm work correctly, we have to rearrange the characters of S so that no palindrome will be there. Okay. So the thing is that whenever there is a binary string, then there are only two elements, which is 1 0. Okay. So whenever there are repeated elements, for example, let's move towards the whiteboard to understand it more clearly. So first of all, we will discuss a string of length 1. Okay. So when the string of length is 1, in that case the string will be 0 or the string will be 1. So these both the strings are not palindrome, because you have to find if there is a palindrome of size greater than 1. In that case, the algorithm will not work. Okay. So if the string size is already 1, then there will be no substring who is which is palindrome and whose length is greater than 1. So in that case, always the algorithm will work. In the case when n is equal to 2, in that case, what happens is the string can be 0 0, 1 1, 0 1, 1 0. So in these two cases, which is 0 0 and 1 1, these two strings are palindrome. Okay, but these two strings are not palindrome, and neither any of its substring is palindrome, because the substring of 0 1 can be 1 0 or 1, so it is also not palindrome. So these two strings are good for our algorithm. So for these two strings, our algorithm will work correctly, but for these two it will not work. So when the length is greater than 3, so the first observation is that whenever there is two consecutive same characters, for example 0 0 or 1 1, so they are always palindrome. The first case, whenever there is 0 0 or 1 1 in adjacent, so it will always be palindrome. They are palindrome actually. Okay. Now whenever there is a alternate 1 0, for example 1 0 1 0 1, so we have just observed that we can't get adjacent 0 0 adjacent same characters. So if we can't get adjacent same character, we can get alternates only. We can only get alternates 1 0 1 0 1 0. So in this case of alternate also, there is a palindrome of length 3 available. You can say these all are palindromes of length 3. Okay. In this case also the palindrome of length 3 is available. Means whenever the length of a string is greater than 2 or greater than or equal to 3, in all that cases the algorithm will not work correctly. But when n is equal to 2 or the size of the string is 2, then in that case for two such string the algorithm will work, and for n is equal to 1 the string will or the algorithm will always work. This is the basic logic behind the problem. So if we go towards the code part, let's check the code of this problem. So if we go towards the code part, yeah, this is my code. So in that case, what I have done is, wait a minute, yeah, yeah. So in that case, what I have done is that uh,
I have first check if n is equal to 1, then it's always yes. If n is 2, then if the first and second character is not same, means it is not palindrome, then it is yes, otherwise it is no. And in all other cases, it is no. So this is the basically the problem, the solution of this problem. So I hope you understand it. If you have any doubt, you can comment it down or you can join a Telegram. Okay. So now let's move towards the problem B of this contest, which is roof construction. Okay, so this is the problem B. So in this problem, it is asking that we have to arrange a permutation of 0 to n minus 1 numbers in such order such that the maximum value of the bitwise XOR of two adjacent numbers basically should be smallest possible, should be minimum possible. Okay, so basically we have to organize these n numbers which are from 0 to n minus 1 such that the bitwise XOR of two adjacent number should be minimum possible, means the maximum value of the bitwise XOR should be minimum possible. Okay, so first of all we have to observe one thing. Okay, so for understanding we will move towards the whiteboard. Okay, so first of all we have to observe one thing. The thing is that uh, whenever we have to arrange these numbers which are 0 to n minus 1 number, for example this n minus 1 is a 4-bit number. What is 4-bit number? What is a 4-bit number? 4-bit number means that, for example, if we write 9 in its binary representation, so it will be 1001. So it requires 4-bit to store 9 in binary, means 1, 2, 3, 4. So it is a 4-bit number. That is what I am telling, that if n minus 1 is a 4-bit number, in that case the maximum XOR we can get is always equal to that n minus 1, or basically it will be always equal to so let's consider example. एक एग्जांपल लेके समझते हैं इस बात को. So example ये है, for example we have n is equal to 5. Okay, n is equal to 5. So we have to arrange the number 0, 1, 2, 3, 4, or take n is equal to 6 so that there is a 5 also. So we have to arrange these numbers. Okay, so the binary representation of 0 is this, for 1 it is this, for 2 it is this, for 3 it is this one, for 4 it is this, and for 5 it is this. Okay, so आप एक चीज समझिए, you have to listen one thing, that ये जो इसकी लास्ट बिट है, this last bit of these numbers, the third bit, okay, there are two numbers. So every number is, first of all एक चीज आप समझिए, that every number is surrounded by two number, means in a sequence if we write 0, 1, 2, 3, 4, 5. So if we don't consider the corner ones, every number is considered by the two numbers, means ये अगर 1 है उसके बगल में 2 होगा, इसके बगल में 0 होगा. This is the thing. ओके, तो हमें क्या करना है, हमें एक चीज देखनी है कि जो इसकी लास्ट बिट है हमें अगर इसको 0 करना है, बिकॉज हमें मिनिमम पॉसिबल XOR चाहिए. तो अगर हम लोग सबसे पहले लास्ट बिट को देखेंगे ना, अगर लास्ट बिट अगर ऑन रहेगी तो हमेशा XOR जो 4 से बड़ा ही आएगा, क्योंकि लास्ट बिट 4 है, 4 या 4 से बड़ा आएगा. ठीक है, तो हमें इस लास्ट बिट को ऑफ करना होगा. तो इस लास्ट बिट को ऑफ करने के लिए या तो ये लास्ट बिट बिल्कुल लास्ट में 4 लिखा हो कहीं पर, या तो इसके पहले एक 5 हो. अगर 4 के पहले 5 आएगा तो 5 के पहले भी तो कुछ आएगा, तो वो मिला के, मान लो 5 के पहले 3 आया, तो इन दोनों को मिला के अगर XOR लेंगे उस केस में भी ये 7 हो जाएगा, 4 से बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा. 4 5 तो बच जाएगा, 4 5 लेंगे तो 101 और 100 का सिर्फ 1 आता है XOR, बट इसके बाद में कुछ ना कुछ होगा ना. तो उस केस में एक ही चीज पॉसिबल है, ओनली वन थिंग इज पॉसिबल, दैट जो 4 है वो लास्ट में हो और 4 के पहले कोई ऐसी चीज है जो उसको बढ़ाना नहीं हो. फॉर एग्जाम्पल 0 है यहाँ पर, तो इस चीज को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे. सो द थिंग इज, जो भी हमारी लार्जेस्ट बिट होगी उसको हम लोग सेपरेट रखेंगे बाकी नंबर से, सो दैट वो बढ़े ना. क्योंकि देखो जब भी हम लोग 4 को 3 से किया, अगर हम लोग 4 को 3 से करेंगे XOR तो 7 आएगा,
अगर हम लोग 4 को 2 से करेंगे तो 6 आएगा। हमेशा बड़ा नंबर आ रहा है, तो फिर बड़ा नंबर को 4 से छोटा तो जोड़ नहीं आ सकता कभी भी, बिकॉज 4 वहां पर है हमारे पास। 4 से छोटा जोड़ तो कभी नहीं आ सकता ना। 4 को किसी से भी जोड़ करोगे, हाँ 4 को 5 से करोगे तो छोटा आएगा, मानते हैं 4 को 5 से किया था, यहाँ जोड़ तो 1 आया था। बट there is a thing that when we are taking XOR of 4 and 5, then there will be a XOR of 5 and something else also, and there in that case it will be greater than or equal to 4। हम लोग 4 से 5 कर रहे हैं तो 1 आ रहा है, लेकिन 5 कभी तो किसी न किसी से हो रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है, फिर तो वो हो रहा होगा। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, ऐसा करेंगे कि ये जो जितने भी जो ऑन है, ये बिट जो सबसे बड़ी बिट है उसको हम लोग बिल्कुल अलग कर लें, सेपरेट कर लें। इसका मतलब ये होगा कि अगर हमारे पास जो सबसे बड़ा नंबर है वो थर्ड बिट का है, तो जितने भी नंबर थर्ड बिट्स के होंगे उन्हें हम लोग 0 से एक तरफ कर लेंगे और बाकी नंबर को हम लोग इस तरफ कर लेंगे। बात समझ में आई? इस केस में क्या होगा कि जो 4 का जोड़ है 0 से होगा तो 4 ही आएगा, इन दोनों का जोड़, इन दोनों का जोड़ 1 हो जाएगा। और यहाँ पे सारे जोड़ हमेशा ही 4 से छोटे ही रहेंगे, क्योंकि यहाँ के सारे नंबर ही छोटे हैं 4 से। तो किसी का भी नंबर का जोड़ उसकी बिट से ऊपर नहीं आ सकता है। ये नंबर 2 बिट का है तो इसका जोड़ मैक्सिमम 3 आ सकता है, क्योंकि 2 बिट का मैक्सिमम नंबर 3 होता है। ये नंबर तो 1 बिट का है, तो इसका अगर किसी और के साथ जोड़ करेंगे तो हमेशा 1 ही आएगा, इससे बड़ा नहीं आ सकता। हाँ, इसका 2 के साथ करेंगे तो ये 1 बिट का है, 2 बिट का है, तो मैक्सिमम 3 आएगा, और 3 आ भी रहा है। तो किसी भी के साथ किसी नंबर का जोड़ करेंगे तो जो मैक्सिमम बिट होती है उसके मैक्सिमम नंबर से बड़ा नंबर नहीं आ सकता है। तो इनका जोड़ कहीं भी करेंगे तो नंबर जो 3 से बड़ा नहीं आ पाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जब कार्य करेंगे आप 0 का 4 से करेंगे 4 आएगा। 4 तो हम लोग बता ही रहे हैं कि 4 तो आएगा ही, 4 से छोटा तो आ नहीं सकता जोड़, क्योंकि यहाँ पे 1 है, जो लार्जेस्ट बिट है उतना जोड़ तो आएगा ही आएगा। आई होगा बात आपको समझ में आ गई। तो एक काम है, कोड पार्ट पे चलते हैं। तो कोड पार्ट में सबसे पहले क्या देखना होगा कि ये जो नंबर है कि 4, ये जो हमारा लार्जेस्ट बिट है उसका नंबर कहाँ पे आ रहा है। तो उसके लिए क्या करेंगे, लॉग निकालेंगे, जो n माइनस समझ लो उसका लॉग निकालेंगे, log 2 करेंगे उससे, और log 2 की जो वैल्यू आएगी उसका हम लोग फिर पावर कर लेंगे। तो हमारे पास पावर ऑफ 2 लेस देन n माइनस 1 लेस देन इक्वल टू -1 आएगी। तो हमें वही निकालनी है। हम लोग उसको 0 से उसको 0 के इस तरफ कर देंगे, बाकी नंबर 0 के उस तरफ कर देंगे। आई होप समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। तो एक काम करते हैं कि अब चलते हैं कोड देख लेते हैं इसको चला। तो देखो मैंने कोड में क्या किया हुआ है, कोड में मैंने क्या किया हुआ है, या सो हाँ जी, तो यहाँ मैंने क्या किया, मैंने बहुत ही छोटा सा कोड लिखा हुआ है। जब मैंने log 2 निकाला -1 का, फिर मैंने उसका पावर ले लिया ओके 2 के साथ, फिर मैंने 0 से जितने भी उससे छोटे नंबर थे उसको एक तरफ प्रिंट कर लिया और उससे बड़े नंबर को एक तरफ प्रिंट कर लिया। तो एक छोटा सा कोड है, मैं आपको लिंक दे दूंगा, इसका चेक कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, टेलीग्राम में से पूछ सकते हो, कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई होप यू लाइक इट। सब्सक्राइब टू चैनल, ज्वाइन टेलीग्राम।